अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मटन चॉप्स 2.0। इस मज़ेदार रेसिपी के लिए हमें चाहिए Hey guys, what's up and welcome back to your video. Today we are going to be making mutton chops 2.0. For this delicious recipe, we are going to be needing आधा kg mutton chops, half kg of mutton chops, 2 tablespoons of garlic and ginger paste, 2 tablespoons लहसुन अदरक paste, आधा tablespoon lal mirch powder, half tablespoon of red chili powder, आधा tablespoon kutti mirch, half tablespoon of red chili flakes, आधा tablespoon namak, half tablespoon salt, 2 tablespoon नींबू का juice, 2 tablespoons of lemon juice, आधा teaspoon ajwain, half teaspoon of ajwain, also known as ajwain, caraway, bishop's weed, and carom, आधा teaspoon black seed या kalonji, half teaspoon of black seed, आधा tablespoon zira, half tablespoon of cumin powder, आधा tablespoon coriander धनिया powder, which is half tablespoon of coriander powder, और आधा tablespoon काली मिर्च powder, जो है half tablespoon of black pepper powder, 3 tablespoon ऑयल जिसमें मैंने एक अनियन जो चॉप है उसको फ्राई किया हुआ है. So 3 tablespoons of oil in which I have fried 1 whole onion which is chopped, and 1 cup dahi, 1 cup of yogurt. So let's get on with this recipe. मेरे पास मेरे सारे मसाले इधर है और मटन चॉप्स भी, और इस रेसिपी के लिए पहले हमें करना होगा. So I have all my spices here, including the mutton chops, and for the first thing we're going to need to do is हमें दही में सारे मसाले डालने और chopped onion जिसमें 3 tablespoon oil में हमने फ्राई किया था. So I'm going to put all the spices in the yogurt, also including the 3 tablespoon of oil in which we fried the onions. तो अब मैं दही को इस bowl में डाल रही हूँ और मैं इसको निकाल. आप कोई भी चीज़ से मिक्स कर सकते हैं, मगर मैं whisk यूज़ कर रही हूँ. आप चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं. और I am going to just, you can mix this with whatever, but I'm using a whisk because it's easier. You can use a spoon as well if you have one. I mean, like you do. So lemon juice, ajwain, kalonji or black seed, sugar dhania powder और black pepper. और मैं इसमें अपना onion जिसमें 3 tablespoon oil है भी डालूंगी. I'm also going to put the onion in which there are 3 tablespoons of oil included. अब मैं अपने whisk से इसको mix करूँगी जब तक ये mix हो जाए. So I'm just going to use my whisk and mix this until it's well combined. जैसे आप देख सकते हैं इसका color आना शुरू हो गया. And now that it's mixed, I'm going to put this in my mutton chops. अब मैं अपने mutton chops में सारा मसाला डालूँगी. और मैं gloves पहनूँगी. I'm just gonna wear my gloves. और मैं अपने हाथ से इसको mix करूँगी. जैसे आप देख सकते हैं ये mix हो चुका है और सारा mutton chops cover हो चुके हैं. As you can see, this is well mixed and all the mutton chops are covered. और I'm going to set my gloves aside. मैं अपने gloves side में रखूँगी. और मैं इसको overnight यानी 12 घंटे इसको फ्रिज में रखूँगी. So I'm going to put this in the refrigerator for overnight.
the next day and it's time to take the mutton chops out of the fridge. अब अगला दिन हो गया और हम अपने मटन चॉप्स फ्रिज से निकालेंगे. जैसे आप देख सकते हैं ये निकल गया और मैंने ऊपर इसका cellophane wrap लगाया था. As you can see, it's out and I had put cellophane wrap on top of the mutton chops. और मैं अपने चम्मच के साथ इसको मिक्स करूँगी. I'm just gonna mix this with my spoon. और फिर then I'm just going to put this into my pot here. और फिर मैं इसको अपनी pot में डालूँगी और अब हम चूल्हे पर जाएंगे. Now we'll just head to the stove. अब हमारे mutton chops ऐसे लग रहे हैं and as you can see they're like this. They are not cooked right now. ये अभी पके नहीं हैं और मैं चूल्हा ऑन कर रही हूँ 40 minutes के लिए 40 and I'm just going to put this on the stove for 40 minutes. अब 40 minutes 40 मिनट हो गए और हम देखेंगे अगर पक गया. Now it's been 40 minutes and we're gonna check if it's cooked now. Whoa, बहुत अच्छे लग रहे और ये कुक हो गया. Now this is cooked. अब हम अपने काउंटर पे जाएंगे. Now I'm just gonna head to the counter. अब मेरे पास अपने mutton chops इधर और ये पक गए. I have my mutton chops here and they're done. और wow, अब देखिए ये बहुत अच्छे लगे और मैं अपने डिश में निकालूंगी. This is done and it looks amazing. I'm going to take this out. मटन चॉप्स हो गए थे और ये बहुत मज़े के लग रहे हैं. अगर आपकी रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे कमेंट डाउन बिलो में बताएं और आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. Bye. Have it. Your mutton chops are ready and they look amazing. If you guys like this recipe, tell me in the comments down below and give this video a big thumbs up. Please like, subscribe and share my videos and go follow me on Instagram, Facebook and TikTok. Bye.